So if you have benzoic acid, and you treat this with NaOH, then this hydrogen, which is acidic hydrogen, this will be leaving the C double bond O and oxygen, and it's going to give you a salt that is known as sodium benzoate. Sodium salt of benzoic acid. Here COO is having negative charge and Na is having a positive charge. Okay. Now, when you further react this with NaOH and CaO with heat, then you are going to get benzene. Okay, then you are going to get benzene. Plus, you also get Na2CO3, but that is another thing. All right, the third method of preparation, that is reduction of phenol. In reduction of phenol, you have OH, you use zinc dust, and you get benzene. Assalamu alaikum, Aisha. How are you? Good. After a very long time, I think. Right? Yes, sir. Due to some problems and all, I could not join. Okay. So, were you watching the lectures? No, sir. I was not able to watch it. Still, I'm not recovered. Okay. I hope all of you have written this. And then moving on to the chemical properties. Okay. Please write the next topic. Chemical properties. There are a few things that you should note down regarding benzene. As you can see, benzene has a double bond, right? As not one double bond, rather there are 3 double bonds in benzene. Okay, but it does not show reactions, such reactions that alkenes show. So it is not showing characteristic reactions of alkenes, but still it is having double bond. Why is that? Because all the double bond, it is what? These are partial double bonds. You can write it like this also. And then you can write the resonance hybrid structure, that is going to be the benzene ring, and the pi electron is delocalized. Okay, so you don't have a double bond at any 2 carbon atom, rather all of these are what? Partial double bonds. So you'll write as benzene has partial double bond with delocalized pi electrons. It does not show characteristic
reactions of alkene. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो इसमें सबसे पहली बात, benzene does not decolorize bromine water. ठीक है. So ये एक तरह का, it's one of the most characteristic reaction, or rather I can say it is one of the most characteristic test for the test of benzene. If you get some kind of unsaturation, right, you have got a formula and you have figured out, okay, fine, there is some kind of unsaturation there, but that unsaturation is not decolorizing the bromine water, then that means that unsaturation is because of benzene ring. Okay, unsaturation means those pi bonds are of what? Those pi bonds belong to benzene ring. This will be very helpful in your 12th standard. इस line को ना अच्छे से लिखिए बिल्कुल. Benzene does not decolorize bromine water. So in 12th standard you will see many questions in all the different 4 chapters of organic chemistry, that they are giving you, they're talking about some compound, and then they write that, okay, but this compound does not decolorize bromine water. That means it should quickly click in your mind that it is some benzene ring is going to be there in the structure. Okay, so this line is very important. Please make sure that you learn this line and you by heart this line, as you have by hearted many lines at Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule. Set-Zepf rule is also very one of the most important rules in the 11th standard that will be used in 12th standard. That is, more substituted alkenes are more stable. Markovnikov rule that says negative part on that carbon which has less hydrogen. Anti-Markovnikov rule says that negative part on which carbon? On the carbon which has more hydrogens. So these are one-liners from 11th standard that will be very helpful in the 12th standard. One of those lines is benzene does not decolorize bromine water. So if you have anything that is going to not decolorize the bromine water and it has unsaturation, that means it is going to be benzene. It can never be alkene, or it can never be alkyne, because both of them are going to decolorize the bromine water with unsaturation. Benzene is the only one which is not going to decolorize the bromine water with unsaturation. Okay, so please remember this. Now, so what type of reaction does it show? And also you can write, since as alkene it does not show characteristic or general addition reaction. What does it show? Since benzene is what? It is electron rich. It shows electrophilic aromatic substitutions. As benzene is electron rich, it can attack on electrophile and shows electrophilic aromatic substitution reactions. Okay, it shows EAS, electrophilic aromatic substitution. There are a few electrophilic aromatic substitution that we have to learn. Okay, so write the topic, electrophilic aromatic substitutions. Now, in electrophilic aromatic substitution, write the number 1 reaction, nitration. Okay, I'm writing the reaction of nitration. Okay, and there are subsequent electrophilic aromatic substitution. उसमें से आपको एक pattern recognize करना है. ठीक है? There is something that I want to teach you guys. First of all, you will just write this reaction as it is with me. Subsequent reaction, you will be understanding more clearly. You are going to use HNO3. Wait a second. You have to use concentrated HNO3. So better, I should write conc HNO3. And there will be some drops of concentrated sulfuric acid also. So there will be conc H2SO4 and you will get NO2. Okay, and you will get NO2 in the top.
This is what? This is nitrobenzene. This is nitrobenzene. Okay. Now, first of all, here, please see what has attached on the benzene ring. Tell me, guys, can you please pronounce it? What is attached on the benzene ring? After we did nitration, after we added concentrated HNO3 and H2SO4, tell me, what is attached on the benzene ring? NO2. NO2. ठीक है? Now, NO2 has been attached. और बाकी लोग को नहीं दिख रहा है क्या? Why are not other people answering? What is attached on the benzene ring? Yes, Waziha, Aisha, Hiba, Tarif, please tell me. After the reaction, what is attached in the benzene ring? NO2. NO2. Okay. Now, also one more thing. Hiba, can you tell me how many hydrogen does this have? This red carbon, it has how many hydrogens? Yes, Hiba. Yes, Hiba, how many hydrogens? In nitrobenzene. No. This red carbon, I'm asking. This red carbon. Okay. 2 hydrogens. How many bond does it have? 2. 2 bonds. Oh no, sorry. One. One what? One hydrogen or one bond? 100. One hydrogen, right? And all the other carbons will also have one hydrogen, correct? Yes, sir. So can we say that nitrogen has been placed instead of hydrogen? So nitrogen substituted hydrogen, correct? Yes or no? Yes, sir. Anna? So that is why this is electrophilic aromatic substitution. Okay, that what is happening? Electrophile is substituting. Yeah, 1 hydrogen, 3 bonds. Correct, was yeah. This is nitrobenzene. Okay, so whatever is attached on the benzene ring, that is going to be the electrophile. Okay, that is going to be the electrophile. And I hope all of you remember electrophile means what? Electrophile means electron rich or electron poor. Tell me, guys, electrophilic means electron rich or poor? Poor. Yeah, very good. This means electron poor. And that is why NO2 will have a positive charge, and the positive charge will be on that carbon, which is on that atom, which is directly attached to the benzene ring. So NO2 positive will be the electrophile. Okay, so in the subsequent reaction, I'm going to write the reaction. You are going to identify the electrophile. Will that be cool? Can all of you do that? Yes or no to me? Yes, Devangi, Hiba, Tarif, tell me, guys, Abdullah, Waziha. I will write the reaction. You have to identify the electrophile. Can all of you do that? Yes, sir. है ना, आसान है, ठीक है, please try. Right, next, halogenation. Okay, in halogen you can take Cl2 and Br2, and there are some reagents, there are some catalysts that you can use. So when you have Cl2, you can use anhydrous AlCl3, or you can also use FeCl3. Okay, but if you are using bromine here, then you are going to use what? You are going to use Fe, then you are going to use FeBr3. Okay, then if you have bromine, you are going to use FeBr3. Will that be clear? Yes or no? I hope all of you will understand once you're writing the notes. Okay, what is the reagent here? What is the electrophile in this reaction? What is the electrophile? हाँ जी बताएं. Yes, Devangi, correct. Others, please answer. No. जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, NO2 positive is the electrophile वजी. हाँ, यहाँ पे क्या होगा? इस रिएक्शन में कौन होगा electrophile? I'm asking that. What is the electrophile in halogenation? No. फिर से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ, प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, बिल्कुल ठीक है ना? This very easy thing that I'm asking. Please focus, all of you.
What is the electrophile? I said the electrophile is that group of atom or the atom which is directly connected to the benzene ring with a positive charge, and positive charge will be on that carbon atom. Sorry, the positive charge will be on that atom which is directly connected to the benzene ring. I'm not going to take any wrong answers now. It's a very easy thing. You just have to identify something. What is attached on the benzene ring and with what charge? Yeah, correct, Waziha, but it will have a positive charge, right? Yes or no, Waziha? Correct. What about Tarif and Abdullah? You guys cannot answer. Hiba, same thing, but with a positive charge. Right, Hiba? Yes, sir. So halogen, what is electrophile here? Electrophile is Cl positive. Okay. Electrophile is Cl positive. Right, next. Sulfonation. Sulfonation is SO3H. अरे इसमें तो हमने बता ही दिया. चलिए कोई बात नहीं, उसे मिटा दिया हमने. I hope you guys don't remember. Here we use concentrated H2SO4. अच्छा हम ये कर सकते हैं ना. चलिए मेक द प्रोडक्ट बनाइए. कोई बात नहीं, हमने इलेक्ट्रोफाइल बता दिया तो क्या हुआ. नाउ यू कैन मेक द प्रोडक्ट. अभी उल्टा हो गया सवाल. यस और नो? आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दैट. कंफर्टेबल? यस हिबा, देवांगी, वजीहा, ऑल ऑफ यू गाइस, तारीफ, अब्दुल्ला, टेल मी. Yes, sir. हाँ चलिए बहुत अच्छा, कीजिए, आराम से हो जाएगा. एंड सेंड द आंसर ऑन व्हाट्सएप. ओके, सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप. My number is, if you guys don't remember by now, it's 7530-998-007. Okay. Yes, very good, Devangi. That is correct. Okay, Waziha has sent the answer. Waziha, bond ठीक से बनाइए आप, है ना? You see where you have put the bond. The bond will be on that carbon atom which is directly attached. I mean, which is having the positive charge, right? Benzene, and the bond will be with that atom which has positive charge. So make the bond correctly.
Others, please send the answer. Okay, please see, it's very simple. The benzene ring and SO3H. बस हेबा थोड़ा सा बॉन्ड ठीक से बनाएंगे, है ना? सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड विल बी विथ सल्फर, करेक्ट? Yes, sir. Just take care of that thing. Now, after sulfonation, you will write Friedel-Crafts alkylation. Now, in Friedel-Crafts alkylation, we use benzene ring and alkyl halide. For example, I'm taking RCl. Okay. Now, in the presence of anhydrous AlCl3, this bond will break like this. This R is delta positive, so R will be attached on the bond benzene ring. Okay. So we get an alkyl chain on the benzene ring. Now, please see, if you have CH3Cl with the same anhydrous AlCl3, this double comma is because I am just copying the above thing, है ना? AlCl3 का ये short form नहीं होता है. Okay, please remember this is just for copying the above part. CH3. Okay, but for example, if you have something like this, CH3, CH2, Cl, then in this case, since this bond is going to break, CH2 is going to get delta positive and the positive charge, CH2 is going to get attached on the benzene ring. ठीक है, ध्यान रखिएगा. And also, it doesn't matter on which carbon you are attaching right now because all the carbon atoms are same only. So you can attach here also CH2, CH3. This is also correct. Okay, all the carbon atoms are same only. There is nothing different, no different here. Right, the fifth one. Same thing, Friedel-Crafts acylation. Benzene ring plus CH3 C double bond O attached with chlorine. Okay, now this chlorine will again break and carbon will get that positive charge. This is very important. ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, but please remember the bond will be with what? The carbon with double bond O. The one which is attached with chlorine will get the negative positive charge, and then CH3 as it is. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका. What has happened? Chlorine की जगह में अब क्या आ चुका है? Phenyl आ चुका है बस. Okay, this can be done also with one more reagent. That is known as acetic anhydride, which is CH3 C double bond O bonded to oxygen, then again C double bond O bonded to CH3. This beautiful symmetrical compound. Achha, both of them are you going to use AlCl3, okay? And here you are going to get the same thing. This bond is going to break like this, and this is going to get the positive charge. And then you are going to get C double bond O and then CH3 here. Now this compound is known as, both of these are the same compound, they are known as acetophenol. So, Yes, yes, tell me. how does the second one break? How does the second one break? It breaks like this. This O gets negative charge, okay?
और फिर बाद में O जो है ना, ये वाला यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, the hydrogen here, it takes away the hydrogen. I will show the mechanism later on. तो उसमें आपको पता चलेगा all the bases जो भी है ना यहाँ पे, for example here we get Cl negative, this Cl negative is going to take away this hydrogen forming HCl. ठीक है, तो सब चीज बताएंगे, but this is how the bonds break and you get the positive charge here. Okay, Hiba? Yes, sir. So the half part of that is taken away. What half part? H3 C double bond O. Yeah, this gets positive charge. This is attacked by the benzene ring. ठीक है? Yes, sir. And what you're talking about this part, what happens to this part? Yeah. So this CH3 C double bond will be replacing this hydrogen, correct? Yes, So sir. hydrogen will be taken away by this CH3 C double bond forming acetic acid. Yes. Okay. Okay, so we have formed of many different, what we can say, many different electrophile. So first of all, in the mechanism, there are a few steps in the mechanism of electrophilic aromatic substitution. Okay, right mechanism. So all these reactions, they happen in, we can say, 3 steps. The first step is, please write, the first step is formation of electrophile. Okay, formation of electrophile. Second step is formation of sigma complex, or we can say attack on electrophile. Electrophile is all generally shown as E positive. Okay, formation of electrophile, then attack on electrophile. The attack will be done by the benzene ring, more electron rich side. Third is removal of proton. The first 2 steps are same for all the different electrophilic aromatic substitution reactions, but the formation of the only difference in all of these is what? The electrophile. So the formation of electrophile is different in all of these cases, but the next 2 steps is same. So we'll look at the formation of electrophile for all of them one by one, and after that we will do a generalized mechanism for the formation of sigma complex and the removal of proton. So for the first case that we have nitration, please see what happens. In A part, we are going to write about the formation of electrophile. Formation of electrophile. Okay. Now in formation of electrophile, number 1, nitration. In nitration, we use 2 different reagents. We use concentrated sulfuric acid, which has a structure like this, as double bond O, and then you have the OH. Plus we use nitric acid. Nitric acid has HO bonded to nitrogen, double bond O, and a single bond O like this. Okay. Now in this case, sulfuric acid is more acidic. Nitric acid is less acidic than sulfuric acid. That is why nitric acid, relatively speaking, in the presence of sulfuric acid, it will act as a base. Why? Because what is an acid? Acid and bases are relative terms only. If you add something which is more acidic to what, more acidic than water in water, then water becomes what? Base. If you add a base in water, water becomes acid, right? So in this case right now, in the presence of sulfuric acid and nitric acid is a weaker acid. That is why it will act as a base and it will abstract one of the protons like this. Okay, so it will attack on the proton, sulfuric acid, and you are going to get HO, S double bond O, double bond O, and O negative. So as you can see, this is what? This is a kind of a particular atom or polyatomic ion. It is what? Polyatomic ion with a negative charge. Please remember this negative charge is important. Okay, there is a negative charged particle here. Plus, what do we have? Plus we have H oxygen. This oxygen has now another H and bonded to nitrogen also, double bond oxygen, another double bond oxygen. That is why this oxygen is going to get positive charge because it is attached with 3 different bonds, right? It is attached with 3 different bonds. Now, as soon as you see this HOH plus forming, you will always break the bond and give the
electron to oxygen atom because it is going to form water. Okay, so whenever you form water, it is going to be formed like this in organic chemistry. You have HOH with a positive charge. So now you have this. What do we have? HSO4 negative. HSO4 negative plus we have what? H2O. And we have got our electrophile, that is NO2 positive. Why NO2 positive? Because nitrogen is losing these two electrons, right? So one of its electron is being lost. That is why nitrogen gets a positive charge. All of you understood the formation of electrophile and nitration? Yes or no? Please tell me. Anji, बताएं. What about others? All of you got it? Okay. What about Devangi? Was Hiba, Tarif, Abdullah? Yes, sir. Understood? Yes or no? Okay. See next. Halogenation. Actually, halogenation देख लीजिए कोई बात नहीं. Halogenation, in this case, you can take AlCl3 or sorry, you can take Cl2 or Br2, any of these cases. Okay, so I'm taking Cl bonded to Cl, plus we have AlCl3. Now AlCl3, if you see, it is having how many bonds? It is having only 3 bonds. 3 bonds means 6 electrons. 6 electrons means not octet is not complete. Incomplete octet means electron poor. And since it is electron poor, it is going to act as a lowest base. Sorry, it's going to act as a lowest acid, and this chlorine is going to attack on this aluminium. And this is going to form AlCl4 negative plus Cl positive. Can you see one more negatively charged species formed? Yes or no? Please tell me. As we are forming an electrophile, there is also a negatively charged species formed. Yes or no? Please tell me. Hanji, बताएं. Can all of you see this? AlCl4 negative. Here we have HSO4 negative, right? So please remember that we have also a negative charged particle. Okay. After that, we will write Fieldcraft alkylation, which is very similar to that of halogenation. Here also we are going to have RCl plus AlCl3. And again, this chlorine is going to attack on the aluminium because aluminium is electron poor. You will get R positive and you will get AlCl4 negative. Fourth is Friedel-Crafts acylation. In Friedel-Crafts acylation, we are going to have what? We're going to have a simple molecule like this. Cl, CS3, C double bond OCl plus AlCl3. Then again, this chlorine is going to attack on the aluminium, leading to the formation of CH3 bonded to carbon, double bond O, positive charge plus AlCl4 with a negative charge, right? Now, fifth one is sulfonation. Sulfonation is double bond O, OH. There will be one more sulfuric acid, double bond O, and OH. Okay. Now, as you know, water can also oxidize, water can also dissociate into what? If you have 2 water molecule, तो क्या होता है? Please see. HOH plus HOH. एक water molecule acid काम करेगा, एक water molecule base की तरह काम करेगा. ठीक है? So what is going to happen? This oxygen atom is going to attack on this hydrogen, leading to formation of H3O positive and OH negative. है ना? ऐसे ही तो होता है. So it is known as what? It is known as auto-ionization. So when you have electrolyte, only one type of electrolyte, then also dissociations takes place, and इसमें एक किसकी तरह काम करेगा? Acid की तरह, और एक base की तरह काम करता है. So you have this oxygen atoms. This will attack on this hydrogen, leading to formation of again HSO4 negative, plus you will get HOH bonded to sulfur double bond O, and OH. Again, this oxygen will have positive charge. This bond will break, and you will get HSO4 negative plus H2O plus SO3H positive. So this is the electrophile for sulfonation. Again, we have got a negatively charged SSO4 negative. Is this clear? Yes or no? Please tell me till here. यहाँ तक clear है सबको?
Okay. अब देखते हैं, देखिए सारा का हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर लिया, राइट। वी हैव नाउ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिए आप लोग, सेकंड वाला, अटैक ऑन electrophile. Okay, so we have the benzene ring plus E positive. With one of the pi bonds, the benzene ring is going to attack, leading to formation of, देखिए pi bond टूटेगा, this carbon अगर इसको हम इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हैं, this E दे रहे हैं, इस कार्बन के पास अब तो कितने बॉन्ड थे, पहले भी 3 थे बॉन्ड, एक हाइड्रोजन था, अभी भी 3 बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है, राइट। दिस हाइड्रोजन इज स्टिल देयर, these bonds are as it is, this carbon is going to get a positive charge, ठीक है, but this positive charge is stabilized because of resonance, as you can see, एक resonating structure, you will get the double bond here, E and H are as it is, the positive charge here, this pi bond will move like this, get one more resonating structure with pi bond here, E here and H here, right, and the positive charge is here. Clear है सबको? yes or no, please tell me. हाँ जी बताएं. Is this clear that this sigma complex is known as sigma complex and it is what? Resonance stabilized. अगर आपसे mechanism पूछ लिया तो आप ये दिखाइएगा, this is resonance stabilized. That is why this carbocation is formed, resonance stable. Okay. Now, once you have attacked on the electrophile, the third step is what? Removal of proton. Now, you remember all of these negatively charged species? इनको भी तो न्यूट्रल होना है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, तो उसको हम लोग बेस की तरह काम करता है बोलते हैं, राइट। सो आई विल गिव दिस ऑल ऑफ देम, व्हाटएवर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वेयर देयर, अ जनरल टर्म दैट इज बी नेगेटिव, है ना, बी नेगेटिव। सो वी हैव, क्या मिला था हम लोग को लास्ट में? Okay, we had this bond here, the electron and hydrogen here. So electrophile and hydrogen here and here. The positive charge was here. Okay. Now the B negative will come, all the negatively charged species, it will attack on the hydrogen atom. Now, since hydrogen is getting negatively charged electrons from this base, we can say, or negatively charged species, this hydrogen is going to give the electron to this bond, and it is going to regain the aromaticity, and we have the electrophile as it is. Chaliye. Is the mechanism clear? Yes or no? Please tell me, guys. All the 3 steps. Yes or no? Please tell me. Yes. Are all the 3 steps clear, na? Devangi, Hiba, Tarif, Abdullah. Please tell me, guys. Waziha. आयशा, आपको आ रहा है समझ में? Yes, Aisha. Aisha not here. चलिए. Now, right next. क्वेश्चन बता रहे हैं ना कैसे आएंगे? आने तो दीजिए भी हमको क्वेश्चंस पे. एक तो सीधा ये सवाल आ सकता है ना वसीहा, इस तरह से, क्या आप प्रोडक्ट बनाइए, इस तरह से आपको रिएजेंट दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, या तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। नाउ प्लीज सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है और जहां से सवाल थोड़े से टफ बन सकते हैं, दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ओके, ऑफ डिफरेंट ग्रुप। प्लीज राइट. Directive influence. चलिए देखिए, एक चीज होती है प्लस एम ग्रुप, these are ortho and
पैरा डायरेक्टिंग। एक चीज होती है -M ग्रुप, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग छोड़ दीजिए, आप ये बताइए +M एंड -M कितने लोग को नहीं याद है? डू यू नो व्हाट इज +M एंड -M? यस हिबा, वजिया को कुछ भी इधर उधर से बोलना है बस। मार्कोनिकॉफ नहीं है ये। +M एंड -M, हिबा आपको याद है? हिबा, डू यू नो व्हाट इज +M -M? I think I forgot. ओके। देवांगी, आपको याद है +M No, sir. -M? भूल गए, ठीक है चलिए। +M -M नहीं याद है, ओके। ऑर्थो पैरा और मेटा, स्टार्ट करते हैं वजीहा से। टेल मी वजीहा, डू यू रिमेंबर व्हाट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा? अच्छा जी, आपका माइक तो ऑन है, आप बताएंगी क्या होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा? जैसे ये बताइए क्या है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है? वजीहा, टेल मी, इज दिस ऑर्थो, मेटा और पैरा? अच्छा, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स? हिबा, टेल मी, इज दिस ऑर्थो, मेटा और पैरा? So there's only हिबा, one तारीफ, group. चार्ट में बताएंगे प्लीज। अच्छा, ये सवाल हमने शायद पूछा था आप लोगों से ना, ठीक है। वजीहा को नहीं याद, ध्यान आ रहा। तारीफ, अब्दुल्ला, आप लोग तो पता नहीं क्लास में है या नहीं है। ओके, वजिया ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? वजिया, कैन यू हियर मी? माइक क्यों नहीं चल रहा है आपका? माइक क्यों नहीं चल रहा है वजीहा आपका? ऐसे हमको बहुत दिक्कत होती है। फिर बताइए, हम भी आपको चैट में लिख लिख के समझाने लगे, कैसा लगेगा? सर वो शायद खराब है, फोन में आप लगाइए फिर। वालेकुम अस्सलाम फहद, यू वेर हियर देन यू वेंट अवे। वजीहा, कैन यू प्लीज प्लग इन योर फोन? फोन से कनेक्ट कर लीजिए, आप किसी ऐसे डिवाइस से कीजिए जिससे हम आपकी आवाज सुन सकें, क्योंकि उसी तरह समझाने में आसानी होती है। जल्दी कीजिएगा मगर, ठीक है ना? एंड इफ यू कम टू द क्लास, आई एक्सपेक्ट दैट योर माइक शुड बी वर्किंग, ठीक है? अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे, जल्दी से कीजिए, पॉसिबल नहीं होगा तो ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। हाँ जी, पहली बात, एक ग्रुप में ऑर्थो, मेटा और पैरा नहीं होता है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 ग्रुप्स। हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। 1 कार्बन between 2 groups, and ortho meta para is only for only when you have 2 groups in the benzene ring. If you have 1 group, तो ortho meta para नहीं है. If you have 3 groups, then ortho meta para नहीं है. If you have 4 groups, तो ortho meta para नहीं है. It is only and only when you have 2 groups attached to it, तभी ortho meta और para positions का कोई definition होता है. If you don't have 2 groups, if you have 1 group, 0 group, 3 group, 4 group, 5 group, 6 group, it doesn't matter. It is not going to be defined. None of the position is going to be ortho, none of the position is going to be meta or para. Ortho, meta and para is only defined when you have the ortho, meta and para positions in the benzene ring is only defined when you have only and only 2 groups. Now listen, when we have 2 carbon between, when we have, when you have 0 carbon, right? When you have 0 carbon between the groups, ठीक है, then it is going to be ortho. तभी क्या हो जाता है? Then we say that it is ortho when there are 0 carbons between the group, ठीक है? For example, OH and Br, this is what? This is ortho. OH and Br,
This is ortho. OH and Br. This is ortho. Br and OH. Br and Br. This is ortho. Br and CHO. This is ortho. CHO and OH. This is ortho. Because we don't have any carbon atom, है ना? इन दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, दोनों के बीच में कोई भी कार्बन एटम्स नहीं. ओके, गॉट इट? फजीहा, यस और नो? टेल मी. ओके. Second, when you have one carbon between the groups, then it is known as meta. For example, if you have six carbon, है ना? Br हमने लगाया सेकेंड कार्बन पे. बताइए मेटा वाला कार्बन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6. बताइए. वेरी गुड. दिस इज व्हाट? 2 के बाद 3 छोड़ दिया आपने, एक कार्बन, चौथा वाला क्या हो गया? मेटा हो गया. ओके, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. One carbon in between. Third is if you have 2 carbons between the groups, then it is known as para. ठीक है? अब क्लियर है सबको? यस और नो? प्लीज टेल मी. Is everyone clear about ortho, meta and para now? Yes, sir. Okay. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज प्लस एम एंड माइनस एम. ठीक है, प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टली. दैट मींस अगर प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे आपके पास जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो NO2 कहाँ लगेगा? इफ यू हैव प्लस एम ग्रुप देन इट विल बी ऑन व्हाट? Ortho. And if you are having meta, then the electrophile will be in the meta position. ठीक है, तो उसको भी हम एक बार लिखा देते हैं. If you have a benzene ring and you have a plus M group, then the electrophile, whatever electrophilic aromatic substitution you are doing, that electrophile will attach on ortho position and para position. That plus M will be as it is. Electrophile will attach here and electrophile will attack on the para position. Okay, next is if you have minus M group, the electrophile will attach on meta position. Okay, ठीक है, बस ये याद रखना आपको. अब बस बात बचा है किसका? Now you just have to identify what is ortho, sorry, what is plus M and what is minus M. Okay, what is plus M and what is minus M. Whenever you have a group attached, आप उसमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? Whether it is minus M or not. So please see, minus M कब होगा? If the group has वैलेंस ऑर्बिटल, और थोड़े सिंपलर टर्म्स में हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तब तो होगा वो माइनस एम. लेकिन जनरली आपको ये केस नहीं दिखेगा. कौन सा केस दिखेगा आपको? द केस दैट यू विल जनरली सी फॉर माइनस एम इज की एटम attached to more electronegative element. किसी को याद है ये स्टेटमेंट? वाया किसी को याद है ये स्टेटमेंट? की एटम अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया. पुराने बच्चे से उम्मीद है हमको. देवांगी, फहद, हाँ गाइस, नहीं याद है? ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखाया था, ये याद है आप लोग को? ये भी नहीं याद है? देवांगी, टेल मी. Yes, sir. क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया मल्टीपल बॉन्ड. इसके एग्जांपल्स में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? इसके एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा CHO आ जाएगा. फिर उसके बाद आपके पास कौन आ जाएगा? यू विल हैव अदर थिंग्स लाइक, लिखिए, साइनाइड हुआ तो माइनस एम होगा. यू हैव NO2 तो माइनस एम होगा.
नाइट्रोजन इज द की एटम। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल अब याद कीजिए, जिनको ये पढ़ना है -m+m, वो जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को दोबारा से पढ़िए, आप लोग को आ जाएगा व्हाट इज +m एंड -m। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ क्या याद करेंगे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। राइट, NO2 N, then you can write CHO, then you can write carbon with a double bond O and some alkyl group attached. What else? Carboxylic acid. You can also have sulfuric SO3H is going to be also what? And then you have C double bond O and then some R group ester. What else? चलिए इतना ही काफी है अभी. Now what is +m? +m is activating in nature. वो क्या करेगा? Whenever you are going to have a lone pair electron, then it is going to be what? +m. Okay. If key atom has lone pair or is alkyl group, अगर सिर्फ alkyl group है, then also it is going to be what? It is going to be +m. Example में आपके पास है NH2. You can have NH C double bond O with some R group attached. ठीक है, ये सारे examples तो नहीं. साथ में OCH3, ether, CH3, some alkyl group attached. हाँ, फिर उसके बाद you can also have CH2, CH3, है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा. And also one more example is halogen X. All the halogen atom, they have lone pair electrons. ठीक है, +m और -m समझ में आ गया आप लोगों को SNO में? Yes, sir. Okay, write this down. लिख लिया आप लोगों ने? Are you done writing? And for example, if I have, let us suppose I already have nitrobenzene. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में हमको क्या कराना है? क्लोरीनेशन, Cl2 AlCl3. तो बताइए क्लोरीन कौन से कार्बन आटम पे लगेगा? You have to tell me in the chat, okay? 1 2 3 4 5 6. Tell me in the chat, क्लोरीन कौन से आटम पे लगेगा? ये ध्यान रखिएगा, है ना. +m और -m में हमने बताया हुआ है, इसको ध्यान रख के बताइए. पहले देखिए -m है या +m, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को लगा दीजिए, आप कहीं पे भी लगाना होगा तो बताइए कहाँ पे लगेगा, कौन से कार्बन पे? 1 2 3 4 5 6 में. यस, बस यहाँ करेक्ट. यस देवांगी, करेक्ट. बाकी हिबा आपको नहीं आ रहा है? यस हिबा, आर यू राइटिंग? हिबा लिखिएगा नहीं है प्लीज आप लोग, ठीक है ना, जब हम आंसर Yes, पूछे तो sir. प्लीज. जी नहीं आ रहा आपको? So is it +m, right? NO2 आप देखिए कौन सा ग्रुप है, Oh, +m sorry, में है, sorry. No, -m में है, -m. तो फिर कहाँ पे Yes. लगेगा बताइए? So 3. या करेक्ट. And let us suppose you had already, ये X पता है क्या है? All of you tell me, X का मतलब होता है, X means Br Cl iodine फ्लोरीन हाइड्रोजन. ठीक है, फिर आप लोग ये होता रहेगा. जी यहाँ पे बताइए, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग होगा या फिर सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग? Yes, tell me. This is +m or -m?
यस, ऑर्थो पैरा, करेक्ट। तो Cl है और क्या लगेगा यहाँ पे, NO2 लगेगा, राइट? नहीं, माय बैड माय बैड माय बैड, NO2 यहाँ पे, ठीक है, प्लस Cl and NO2 यहाँ पे, करेक्ट। चलिए, ये तो हो गया। तो अब आप हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ सवाल, मेरे सेकंड, आपके एनसीईआरटी में कुछ अच्छे सवाल हैं, उनको करते हैं। टू 206, कहाँ गया भाई? हाँ, देखिए, नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू, बेंजीन से क्या कन्वर्ट करना है, बेंजीन टू पी नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। हाउ मेनी ग्रुप्स आर वी एडिंग, टेल मी, इन द बेंजीन रिंग हाउ मेनी ग्रुप्स आर वी एडिंग? हाँ जी बताएं। 2 2 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप ऐड कर रहे हैं बताएं? ये नाइट्रो एंड, नाइट्रो एंड ब्रोमो। ब्रोमो। नाइट्रो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड वी डू टू ऐड नाइट्रो? NO2 अरे भैया, NO2 ऐसे डाल देंगे क्या? नाम क्या है, रिएक्शन का नाम बताए ना, पैरा नाइट्रोजन। बोल दिया। अरे NO2 डालने के लिए कौन सा रिएक्शन कराना पड़ेगा? माय बैड, मेरा क्वेश्चन गलत था आप लोगों से। व्हाट इज द रिएक्शन दैट वी शुड डू इन ऑर्डर टू ऐड नाइट्रो, अब बताएं। अब नहीं बताएगा कोई? नाइट्रेशन। वेरी गुड, है ना? क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन का रिएजेंट कौन बताएगा? टेल मी व्हाट इज द रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन? व्हाट इज द रिएजेंट? Concentrated HNO3. कौन के HNO3? बस, बस हो गया? एक और है साथ में, व्हाट्स वन मोर थिंग? H2SO4. या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आल्सो, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन के लिए क्या चाहिए बताइए जरा, व्हाट डू वी नीड फॉर ब्रोमिनेशन? जैसे क्लोरीनेशन क्या था, हमने Cl2 डाला था ना, उसी तो वहीं पे तो बताया था हमने कि Br रहेगा तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे। प्लीज सी, लिखा नहीं होगा तो फिर हम क्या करें, बट प्लीज सी। Cl डालने के लिए क्या क्या था हमने? हाँ जी, हाँ, हिबा बताइए, हिबा बताइए, बताइए। FeBr3. FeBr3 एंड Br2 भी डलेगा ना भाई, हाँ, कैटलिस्ट हो गया, है ना? ये हिबा। यस। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किसको पहले करें, राइट? नाइट्रेशन पहले या ब्रोमिनेशन पहले? इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी। हाँ जी यस बताइए, सर। क्या करना चाहिए पहले, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन? यस टेल मी। सोचिए मत ज्यादा, ठीक है ना? देखिए, मिस्टेक से आप, अगर मतलब दो ही तो ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, तो आप लोग क्या करेंगे? सर ट्रू बोल देते हैं एक बार, नहीं हुआ तो फिर फॉल्स बोल देंगे सर को। दो ही तो ऑप्शन है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। हिट एंड ट्रायल मेथड अभी तो नहीं पता ना आप लोगों को, थोड़ा ये हो सकता है, या तो आप दिमाग लगा के करें, थोड़ा ये हो सकता है। देखिए, दिमाग लगा के अगर कर रहे हैं तो फिर हम एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, ठीक है? क्यों? वजिया, डू यू हैव द आंसर फॉर व्हाई? अगर आपने कहा है ना कि सर नाइट्रो पहले लिखा तो नाइट्रेशन पहले कर देते हैं, ठीक है, चलिए करके देखते हैं, है ना? ओके वजिया, करके देखते हैं। बेंजीन लिया, इसमें डाला कॉन्क HNO3, कॉन्क है सब, है ना? लिखा नहीं हमने, लेकिन सारा कंसेंट्रेट, H2SO4, और बेंजीन में we have got a nitro group. Now when we are going to add Br2 and FeBr3, तो Br कहाँ पे लगेगा बताइए? Br will attach, Br कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 5 6, कौन से पोजीशन पे लगेगा? NO2 है तो कौन से पोजीशन पे लगेगा? NO2 है तो कौन से पोजीशन पे लगेगा वजीहा? NO, अरे वजीहा, NO2 है तो कौन से ग्रुप में लगेगा? सॉरी,
NO2 है तो कहाँ लगेगा सर? P है तो P ही लगा देंगे ना कहीं, क्या हो गया सर? अभी NO2 है तो क्या हुआ? पैरा बोला उन्होंने, हम पैरा बना देंगे। हाँ, कहाँ लगेगा? हाँ, तो फिर गलत हो गया ना ये प्रोसेस तो। हाँ जी बताएं। दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज रॉन्ग। गॉट इट देवांगी, वजीहा, हिबा, फहद, तारीफ, ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ Yes, यू sir. गॉट दिस? ठीक है, तो हम बताते हैं क्या याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। एक तो आप लोगों ने समझ लिया कि ऐसे तुक्के से नहीं होगा, हम समझाते हैं क्या दिमाग लगाना चाहिए था आप लोगों को। ये बताइए, ये क्या है? पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, तो अगर पैरा है तो पैरा वाला पहला है ना, पैरा डायरेक्टिंग पहले। इफ यू हैव पैरा देन ऑर्थो पैरा, मतलब जो भी पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग मतलब कौन सा होगा? प्लस एम वाला होगा, है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी बताएं। ई है तो पैरा वाला पहले, ठीक है। तो विच इज पैरा डायरेक्टिंग हियर, नाइट्रो और ब्रोमो? टेल मी, व्हाट इज पैरा डायरेक्टिंग? अरे ऑर्थो पैरा में तो पैरा है ना भाई। सर बोलिए, ऐसा नहीं बोलना कोई फिर, सर पैरा डायरेक्टिंग तो कोई नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि वो बिलियनर है, तो मिलियनर तो है ही ना, हाँ या ना? किसी के पास 5 रुपए तो उसके पास 4 रुपए तो है ही ना। तो कोई अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा डायरेक्टिंग तो है ही ना। तो टेल मी विच इज पैरा डायरेक्टिंग, नाइट्रो और ब्रोमो? Nitro. कौन बोला? हिबा, वाज दैट यू? Yes, sir. नाइट्रो बोला आपने या ब्रोमो बोला? So 1 second. 1 सेकंड बोला आपने? टेल मी, 1 सेकंड हो गया। हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ So बताएं। night. हाँ बताइए, बताइए बताइए, आप तो साइलेंट ही हो जाती है, बोलिए बोलिए। Yes. Nitro. नाइट्रो, नाइट्रो क्या है? पैरा डायरेक्टिंग है। Yes, sir. अच्छा, प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है नाइट्रो? Plus one. यस एम। अभी तो लिखाया था, अभी लिखा नहीं क्या आपने? ये लिखा नहीं क्या आपने, बताइए। So I wrote it. क्या? बोलिए बोलिए, चलिए ठीक है, पानी पी लीजिए, आप थोड़ा सांस ले लीजिए, बोलिए क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है आपको? ऐसे बटल मी। Yes, sir. It's plus one. हम्म। No, mine. व्हाट? आप कंफ्यूज हो गई? Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं। So it's plus one. नाइट्रो प्लस एम है, No, not nitro. विच इज Bromine. प्लस एम। हाँ, तो क्या लगाएंगे पहले? पहले क्या लगाएंगे, ब्रोमीन या नाइट्रो? टेल मी व्हाट विल वी डू फर्स्ट, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन? कीप योर माइक ऑन। Bromine. हाँ, ब्रोमिनेशन, Br2 FeBr3। उसके बाद conc HNO3 Yes, sir. and conc H2SO4। ये मत सोचिएगा सर यहाँ पे तो सिर्फ पैरा बोला, ऑर्थो भी तो मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा तो मिल जाएगा ऑर्थो, Yes. क्या करना है? पैरा पूछ रहा है, पैरा तो है ना कम से कम, ठीक है। चलिए, Yes. सवाल क्या है? एम So we नाइट्रो have to क्लोरोबिल, both. सॉरी, You have to write both or only one. नहीं नहीं, अगर उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए बोला ना तो आप पी तक लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने इतना बस दिया रहता ना, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिया Okay. रिएक्शन, तो फिर आप दोनों बनाते ऑर्थो एंड पैरा। एंड ऐसे भी ना, ऑर्थो एंड पैरा में पैरा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एंड ऑल, और पैरा के पास जगह काफी होता है यहाँ पे अटैक करने के लिए। ऑर्थो में जब अटैक होता है ना तो ब्रोमीन थोड़ा सा उसको हिंडर कर देता है, लाइक इट सेज ओ माय गॉड आई हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमको स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे उतना ज्यादा अच्छे से अटैक हो नहीं पाता ऑर्थो पोजिशन में। So that is why para is generally More major product। stable. हाँ, मोर Okay. स्टेबल तो नहीं, मेजर प्रोडक्ट होता है। उसकी Okay. स्टेबिलिटी से रिलेशन नहीं है उसका, उसका रिलेशन है कि अटैक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा वहां पे, ठीक है।
तो वहां पे Yes, जगह sir. ही नहीं है, ब्रोमीन थोड़ा सा बाहर देता है इधर उधर करके, है ना, दैट इज वाई। एंड आल्सो NO2 इज नॉट बिगर ग्रुप। अब यहाँ पे बताइए, अभी लिखिए मत, यहाँ पे बताइए क्या क्या करना पड़ेगा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के लिए। वी हैव टू डू व्हाट टेल मी। नाइट्रो के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए। Nitration, नाइट्रेशन। और क्लोरो के लिए? chlorination. अब बताइए, मेटा है तो पहले क्या करेंगे? मेटा है तो मेटा डायरेक्टिंग पहले ना, क्या पहले करेंगे? Yes, M है तो देखिए, sir. हम ध्यान दीजिएगा कैसे हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या करना है उसका रिलेशन यहां से, कब करना है, द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय दिस पार्ट मेटा पैरा पे, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन है नाइट्रो और क्लोरो में से, विच इज मेटा डायरेक्टिंग? दिस इज NO2 एंड दिस इज Cl। अरे वजीहा, क्या आप लोग बिल्कुल ये हो गए हैं क्या? अभी हमने तो बताया है यहाँ पे ना, ये क्लोरीन वाला अभी तो एग्जाम्पल कराया, ये तो ऑर्थो पैरा था। एकदम ही आप लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्या? यही हम बोल रहे थे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। व्हेन आई हैव डन क्लोरीन, तो उस टाइम तो आप लोगों ने कहा ना ऑर्थो पैरा, तो क्लोरीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे? मेटा डायरेक्टिंग। अभी हमने करके दिखाया था कि नाइट्रो मेटा होता है। देखिए जल्दी आंसर करने में प्लीज मत रहिए, आराम से आंसर कीजिए। सर को बोलिए हमको सर 5 मिनट दीजिए, हम सोच के बता रहे हैं। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, बट इस तरह से आंसर करना बिल्कुल तो बेकार है ना। क्या करेंगे पहले फिर बताइए, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? नाइट्रोजन और क्लोरीनेशन। करेक्ट। सीक्वेंस क्या है? नाइट्रेशन पहले। समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके करती हैं बस आप, बस यार ध्यान से सुनिए आप प्लीज। क्लोरीनेशन उसके बाद, ठीक है। हाँ, के बाद देवांगी, व्हाट अबाउट यू गाइस? आंसर नहीं आया था आप लोगों का? Yes, sir, understood. Yes, अंडरस्टूड क्या? तो आंसर दीजिएगा तब तो। चलिए ये बताइए, यहाँ पे कितने ग्रुप्स लग रहे हैं बेंजीन में, पी टोलोइन में? हाउ मेनी ग्रुप्स? पैराटोलोइन में कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं बेंजीन में? यस हेबा। nitro and CH3. हाँ करेक्ट। ठीक है, तो टोलोइन का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है ना। दोज हु डोंट नो टोलोइन, टोलोइन लुक्स लाइक दिस, CH3 एंड NO2, ठीक है। मतलब सॉरी ये तो नाइट्रो हो गया पी वाला, दिस इज टोलुइन, ओके। सो वी हैव एडेड पैरा नाइट्रोटोलुइन, यानी कि पैरा पोजीशन पे क्या है? NO2 है, ओके। नाउ टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। कौन कौन सा? एक तो नाइट्रेशन नाइट्रो करने के लिए वी हैव 2 ग्रुप्स, NO2 एंड CH3। NO2 के लिए नाइट्रेशन। बताइए CH3 के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्काइल ग्रुप लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? Alkylation. व्हाट अल्काइलेशन? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा पहले करेंगे? नाइट्रेशन और अल्काइलेशन कौन डिसाइड करेगा? व्हाट इज पैरा डायरेक्टिंग? नाइट्रो पैरा डायरेक्टिंग है या CH3 पैरा डायरेक्टिंग है? आराम से देख के बताइए आप लोग। यस करेक्ट CH3. बस, हाँ हाँ करेक्ट बस, यस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पहले करेंगे, उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ या ना बताएं? ठीक है। Yes, sir. अब ये वाले सवाल ना फिर से कर लीजिएगा। एसिटोफिनॉन जो है ना, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमने ये रिएक्शन कराया भाई है, उसी को छाप देना है बस यहाँ पे। जो लास्ट रिएक्शन था ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन छाप दीजिएगा। दिस इज एसिटोफिनॉन, ओके, दिस इज एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप लोग नोट लिख दीजिए। if the product is ortho or para substituted,
then plus M group is added first. If the product is, एंड नहीं लिखा हमने, और लिखा, ठीक है ना, ध्यान से, और तो हो चाहे पैरा हो, दोनों के लिए क्या करेंगे, पहले प्लस एम ग्रुप। इफ द प्रोडक्ट इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि मेटा में अगर आपके पास मेटा पोजीशंस में ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूटेड, देन माइनस एम ग्रुप is added first. ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, reactivity towards electrophilic aromatic substitution. नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स कौन सा है, बेंजीन या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? प्लीज आंसर ऑल ऑफ यू। Benzene. बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अच्छा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट इज व्हाई इट इज अटैकिंग द इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट ऑल ऑफ यू। देवांगी, देवांगी ने आंसर किया है। हिबा, फहद, वसीहा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, यस और नो, व्हाई? Yes. समझ में आ रहा है या फिर देख के हाँ लग रहा है बस? हिबा बताइए, समझ में आ रहा है ना क्यों है ये इलेक्ट्रॉन रिच? Yes, sir. Okay, fine. Now, if I increase the electron density, then the attack will be what? More easy? The attack will be easier if I increase the electron density on benzene, correct? Yes, sir. ठीक है, तो इसी सिंपल फंडे से क्या होता है, प्लस एम ग्रुप्स आर व्हाट, प्लस एम ग्रुप्स increase the electron density in benzene ring making it more electron rich. Therefore, benzene with plus M group are more reactive towards electrophilic aromatic substitution than benzene. ठीक है, बेंजीन आपका क्या न्यूट्रल केस है, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज व्हाई दे आर व्हाट, मोर रिएक्टिव। एंड आल्सो इसी वजह से क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप्स activates, are called activating groups, लिख लीजिए, are activating in nature. Are activating groups, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माइनस एम के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। माइनस एम ग्रुप्स आर गोइंग टू डू व्हाट, माइनस एम ग्रुप्स आर गोइंग टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया, माइनस एम ग्रुप्स आर गोइंग टू डिक्रीज the electron density, electron in benzene ring, making it less electron rich. Therefore, benzene with minus M group are less reactive towards electrophilic aromatic substitution than benzene, and minus M groups are deactivating groups. ठीक है,
उसके बाद आप लोग एक नोट लिखिएगा। You'll write a note. हाइड्रोजन्स यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन are deactivating due to their strong -I effect. इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिंग लिख दिया हमने, क्या लिख रहे हैं हम भी, डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। ओके, लिख लीजिए therefore the electron density in benzene decreases। ठीक है, but it is orthopara directing due to +M। ओके, जो इंपॉर्टेंट बात है बहुत, reactivity is determined by हाइड्रोजन के केस में -I। ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी अटैक होगा, ओरिएंटेशन इज डिटरमाइंड बाय, ओरिएंटेशन इज डिटरमाइंड बाय +M। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इवन दो हाइड्रोजन के आने से क्या होता है, हाइड्रोजन के आने से the electron density decreases। ठीक है, halogens are going to pull up the electrons, but because these are what, but because these are ortho and para directing, तो पूरे रिंग से क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, बट रिलेटिवली स्पीकिंग मेटा पोजिशन और अगर ऑर्थो पोजिशन में देखिएगा तो ऑर्थो पोजिशन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों? +M की वजह से। डेल्टा नेगेटिव उसमें चार्ज जो आया ना, दैट इज जस्ट इन रिलेशन टू द मेटा पोजिशन। So still what is more electron rich, ortho या फिर मेटा, ortho para या मेटा, still ortho and para are more electron rich in comparison to this meta position, but overall क्या हुआ, decrease ही हुआ है। okay, electron density has decreased, but when I compare ortho para and meta, तो उसमें ortho and para की electron density ज्यादा, meta की कम होती है। that is why the electrophile is being attacked by the ortho positions and the para position, not by the meta position। is this clear? yes or no, please tell me guys। हाँ जी बताएं, क्लियर है? Yes, sir. ओके, देखिए ये कुछ सवाल हैं जिनके हम जवाब जब आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं। सजेस्ट लुइस एसिड other than anhydrous aluminum chloride which can be used during ethylation of benzene। ethylation is also one kind of alkylation। तो उसमें आप लिख सकते हैं FeCl3, आपको लुइस एसिड बोला गया, राइट? सो यू कैन राइट FeCl3। ये हो गया। आउट ऑफ बेंजीन M dinitrobenzene and toluene which will undergo nitration most readily। तो आपको ये देखना नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेशन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। when they are talking about most easily, that means they are talking about what, reactivity। तो रिएक्टिविटी में क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी में जो हम लोगों ने अभी बात की, ये 3 पॉइंट्स, +M इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी, -M डिक्रीज करता है, और हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, दे आल्सो डिक्रीज इवन दो दे आर +M। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन तो कुछ नहीं, न्यूट्रल रहेगा बेंजीन। ठीक है, इसमें कोई ग्रुप्स नहीं अटैच्ड है। देन यू हैव M डाइनाइट्रोबेंजीन, यू हैव NO2 हियर एंड यू हैव NO2 हियर। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली -M, है ना। Nitro groups are going to do what, they are going to decrease the electron density using mesomeric effect। and उसके बाद क्या है आपके पास, toluene। toluene is CH3 here, right?
So if I do A, B and C, तो यहाँ पे ये plus M है. So plus M is going to be the most reactive, followed by nothing. क्योंकि nothing में कुछ नहीं हो, ना increase कर रहा ना decrease कर रहा. B is going to decrease the electron density. That is why the least reactive will be B. तो most easily कौन जा रहा है? C जा रहा है. Why? C is most easily, C will most easily undergo nitration because CH3 is what? Plus M group, which increases the electron density and hence it eases the nitration. Is this clear? Yes or no? Tell me. जी बताएं. ये समझ में आया Yes, sir. सबको? आया ना? आया ना? ज्यादा तेज हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है? But I hope all of you understood. फिर से आप लोग देखिए, रीडू दीज क्वेश्चंस, देन ओनली आपके दिमाग में आएगा. अभी तो हम बता रहे हैं ना, आप लोग नहीं कर रहे सवाल को, आप लोग बस बोल रहे हैं कि समझ आएगा, है ना? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन. देखिए हम क्या ऐसे बैठे बैठे कभी नहीं होगा, ठीक है? पेन कॉपी लीजिए, क्लोरोबेंजीन बनाइए, तभी जाके चीजें नजर आती हैं. ओके, यू आर सपोज टू सी इट लाइक दिस, देन ओनली यू विल से इट इज गोइंग टू बी माइनस आई. ठीक है ना? ये क्या होगा? माइनस आई होगा यहाँ पे. इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. देन 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरो सब है इसमें. You have 2 और 4 में sorry, you have क्लोरोबेंजीन. सेकेंड पोजीशन में आपके पास NO2 है और फोर्थ पोजीशन में आपके पास NO2 है. Then we have p नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, NO2 और यहाँ पे Cl, राइट? नाइट्रो एंड क्लोरोबेंजीन, राइट? द पैरा पोजीशन. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड वाले में you have minus I of chlorine and what else you have? You have 2 into minus M, right? एक नाइट्रो ग्रुप, दो नाइट्रो ग्रुप, so you have 2 minus M. अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास? 1 minus M and 1 minus I. अगर हम नाम दें इसको A, B and C, so which of the benzene ring is going to have the least electron density? बताइए जरा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा? Where do you have the most number of minus M group? माइनस M क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ. तो बेंजीन रिंग में लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इन विच ग्रुप? अरे ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछते हम, सीधा सीधा जवाब होगा इसका. सबसे कम कहाँ पे होगा? यस देवांगी, करेक्ट है ना? बी वाले में यू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ माइनस M माइनस I वाले सारे नेगेटिव है, तो बी इज गोइंग टू बी व्हाट? द लीस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय सी जहां पे एक माइनस M और एक माइनस I है, फॉलोड बाय ए. ठीक है? सवाल क्या था इसमें? अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ विद एन इलेक्ट्रोफिल. हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए. डिक्रीजिंग लिखना है तो आप ए, सी और बी ऐसे कर दीजिए, ठीक है? बट यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स ईदर वे यू राइट, क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन सही से दिया हुआ है. ओके, हिबा, वजीहा, फहद, आप लोग को समझ में आया? अब्दुल्ला, तारीफ, समझ में आया आप लोग की? नहीं आया? ठीक है, दूसरा सवाल देखिए. यू हैव टॉलोइन CH3, then you have PCH3 CH6H4 and NO2. तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड you have nitrotoluene, CH3 है यहाँ पे और NO2 है यहाँ पे. Then you have again para substitute nitro and nitro, दो nitro है यहाँ पे. You have NO2 and you have one more NO2. ठीक है? So अगर हम यहाँ पे क्लासिफाई करें, पहले तो this is going to be what? This is going to be plus M, this is going to be plus M and minus M. यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 into minus M, right? 2 minus M. So बताइए, which will be the least reactive? Which will be the least reactive? सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? A, B, C में. Yes guys, tell me. करेक्ट वजीहा, देवांगी. हिबा आप बताइए, आपका आंसर क्लिक करता है. हिबा, यस हिबा, सॉरी. सेंड द आंसर इन चैट हिबा. फहद, तारीफ, अब्दुल्ला, इन लोगों तो इतना बोल बोल के थक गए. Where do you have the most minus M groups? Where do you have the most minus groups? That is going to be the least electron density. It's going to have the least electron density. Yes, Hiba. Correct. ठीक है? So the least is in C. Now followed by
B, because B में एक plus M एक minus M है, right? So it is going to be what? Next, this is going to be the least reactive, followed by B, and then followed by A, that is going to be the most reactive. ठीक है? So this is the order. चलिए, that's it for today. ठीक है? All the things are done. कुछ reactions हैं, आप तो प्लीज NCERT देख लीजिएगा, ठीक है? छोटे छोटे जो reactions हैं ना, उनको हमने नहीं कराया है, जनरली वो आते नहीं है. And maybe, अच्छा, can you go to page number 402 in your NCERT? (402). Can you see this reaction? ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, 500 या फिर 600 कुछ केल्विन टेम्परेचर होगा, और वहां पे उन्होंने ये बनाया हुआ होगा. करेक्ट है? NCERT 402 पेज. एडिशन रिएक्शन होगा वहां पे एक जगह बेंजीन का. आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग सम ओल्ड बुक या न्यू बुक, कुछ ऐसा चेंज हुआ तो फिर पेज नंबर इधर उधर होगा, बट एडिशन रिएक्शन इट इज जस्ट बिफोर द एक्सरसाइजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जो हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज है ना, उससे आप 1-2 पेज ऊपर ले लीजिए, पीछे ले लीजिए मतलब. कैन यू सी दिस रिएक्शन एनीवन? देवांगी, हिबा, फाउंड इट? यही है, बिल्कुल सेम है देवांगी. Yes, sir. और यहाँ पे नीचे देखिएगा, इसके नीचे नाम क्या लिखा है आप बताइएगा जरा. व्हाट इज द नेम? स्ट्रक्चर के नीचे Benzene नाम. hexachloride. आपको सही स्ट्रक्चर लग रहा है? फिर क्या मिसिंग है? इज समथिंग मिसिंग? ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ना आप वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही है. ठीक है? ओके देवांगी.